Good morning, everyone. I hope I am audible and visible to all of you. Okay, so let's start today's session. So, good morning, everyone. Welcome back to our channel, RostrumLegal. So, today we are here on 22nd of October 2024 in the class of Legal News Analysis. And today we are going to analyze the judgment of Supreme Court and different high courts. Okay, so let's start with the point number first. In the point number first, we are having Allahabad High Court's judgment in which the Allahabad High Court granted compensation of 5 lakh rupees to a 35 years old law student whose admission to a law college was cancelled after completing the first semester exam. So what happened in this case? A person's admission in a law college was cancelled, ठीक है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम. भाई एक सेमेस्टर उसका कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया. दैट्स व्हाई इलाहाबाद हाई कोर्ट, व्हेन ही अप्रोच्ड द हाई कोर्ट अगेंस्ट द कॉलेज, देन द हाई कोर्ट ग्रांटेड हिम द 5 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन. लेकिन उसका एडमिशन रीइंस्टेट नहीं हो पाया. व्हाट हैपेंड इन दिस केस? व्हाई द कॉम्पनसेशन वाज अवॉर्डेड टू दिस स्टूडेंट? लेट्स सी. In the case Ajay Kumar Pandey versus State and others, an intra-court appeal was filed. What is intra-court appeal? When we filed an appeal from single judge bench to division bench, it is known as intra-court appeal or later patent appeal. ठीक है ना, ये दोनों ही तरीके के वर्ड जो है इनका मीनिंग सिमिलर है. Before the High Court against the judgment and order of the learned single judge of the High Court. तो appeal was filed before the division bench. Clear हो रहा है? Also known as the two judges bench. So the law student had initially approached the High Court seeking a re-evaluation of his LLB first semester answer sheet as he was dissatisfied with the marks awarded. भी इस बंदे को जो भी मार्क्स अवार्ड किए गए वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था. क्लियर हो रहा है? तो उसने क्या करा? रीवैल्यूएशन के लिए पहले इनिशियली दैट पर्सन that student approached the college authority, but when the college authority denied to help in the revaluation process, then he filed a petition before the High Court. ठीक है? So High Court previously directed the university to give him access to his answer sheet once he applied for the same. Upon revaluation, his marks increased from 36 to 42, but he was denied participation in the Viva Voice for the second semester. अब भैया इनका हुआ क्या कि after the revaluation allowed by the High Court, Allahabad High Court, what happened? Basically, his marks was increased from 36 to 42. 36 से इनके मार्क्स बढ़कर 42 हो गए. क्लियर हो रहा है? लेकिन स्टिल उसको सेकेंड सेमेस्टर का जो वाइवा वॉइस था, ठीक है ना, जो एक तरीके से जो ओरल होता है, वाइवा होता है, ठीक है ना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया. क्लियर हो रहा है? The university then cancelled his admission citing it is illegal. इन्होंने बोला, the university clearly said that the admission given to that person was illegal in nature, and that's why we are not going to promote that person in the second semester. Clear हो रहा है? This is the reason given by the university while cancelling his admission. The university pointed out that those who graduated in 2016 or thereafter were eligible for admission to the 3 years law course in the 2019-20 academic year. What happened in this case? Basically, when you pursue LLB, it's a double graduation course, so you need to be graduated before taking the admission LLB course. But if you are opting for BLLB, BBLLB, then you don't need any graduation to pursue that course. ठीक है ना? अगर आप BLLB के लिए जा रहे हैं तो आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं. बट इफ यू आर परस्यूइंग फॉर LLB, ठीक है ना, तब आपको ग्रेजुएट होना मैंडेट है. आप BA ऑलरेडी करे हो, BBA ऑलरेडी करे हो, तब आप LLB के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. क्लियर हो रहा है? तो इनका बोलना ये था कि if any person is going to opt LLB for 2019 and 20 सेशन, वो जो है ना 2016, 17, 18 का पास आउट होना चाहिए. if before that if any person completed the graduation और उसका 4 साल का 5 साल का गैप है तो वो एडमिशन नहीं ले सकता. ये यूनिवर्सिटी ने बताया. ठीक है ना? The petitioner had graduated in 2008, so there is a huge gap between the guidelines given by the Bar Council of India and the person is having the qualification. तो इन्होंने 2008 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था. अब ये अप्लाई कर रहे थे 2019 and 20 बैच के लिए. क्लियर है? हाई कोर्ट सेड दैट it is rather amazing that the law college has acted not only in careless and reckless manner but also exhibit
a conduct other than bona fide just in order to control and admit students in order to charge fees playing with their future. Bole sahab, if the college is having the idea that that person was completed his graduation 2008 and he was not eligible for pursuing LLB, then why should they take his admission to college? बोले साहब आप तो जो है मजाक कर रहे हो, अगले बंदे के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, ठीक है ना, आपको केवल फीस चाहिए इसलिए आपने उसको अलाउ किया कि आपने पहले मार्कशीट नहीं देखी थी, क्या आपको नहीं पता था कि इन विच ईयर दैट पर्सन इज पास आउट? क्लियर हो रहा है? सो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाइड डिक्लाइन टू ऑर्डर द रीइंस्टेटमेंट ऑफ द पिटिशनर. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला कि एज पर द गाइडलाइंस, आफ्टर लुकिंग इनटू द गाइडलाइंस, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू रीइंस्टेट द एडमिशन ऑफ दैट पर्सन, बट we are in a position to award compensation in this matter as the college was liable for this particular act. Clear हो रहा है? अब we find that, तो क्या बोला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि साहब देखो रीइंस्टेट तो नहीं कर सकते, ठीक है ना. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं वो यही बोल रही हैं कि भाई आपको 2016 या उसके बाद अगर आप पास आउट हो देन यू कैन परस्यू एलएलबी इन 2019 एंड 20 बैच. लेकिन ये जो बंदा है ये 2008 में पास आउट हुआ था, लेकिन कॉलेज को ये चीज पता थी, उसके बावजूद इनका एडमिशन लिया, इसलिए इनको कॉम्पनसेशन अवार्ड किया जा सकता है. तो उन्होंने क्या बोला? वी फाइंड दैट once it is admitted to the law college that the appellant writ petitioner had not practiced fraud and submitted all the relevant documents and was accorded admission due to the fault of law college, then in order to compensate the appellant writ petitioner for jeopardizing his academic career amount to rupees 5 lakh to be awarded as monetary compensation is reasonable and not excessive. तो इन्होंने क्या बोला कि साहब क्योंकि यहाँ पर बंदे की कोई गलती नहीं, तो उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉलेज को अवेलेबल करा दिए, तो उसके बावजूद भी कॉलेज ने उसका एडमिशन लिया, उसको पहले नहीं बताया. नाउ दैट पर्सन इज हैविंग द राइट, ठीक है ना, जिसको ये 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है. सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर फर्स्ट. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. If any person is having any confusion with the point number first, please let me know in the comment section. Okay, so let's jump on the point number second. In the point number second, we are having a very interesting judgment from Andhra Pradesh High Court. What happened in this case? Let's see. In this case, the High Court said that failure to consider future prospects deprives the dependents of rightful compensation in motor accident matters. ठीक है ना? So what happened if any person met with an accident and that person died? So as per the motor accident motor vehicle act, that the deceased dependents should have the right to claim compensation from the insurance company. Clear हो रहा है? ये चीज कहीं ना कहीं अधिकार बनता है. For that, for the claim that the dependents of the deceased approach the motor accident claim tribunal. बात समझ आ रही है? तो यहां पर हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या बोला कि साहब अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को आप नहीं कंसीडर करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ एनी पर्सन डाइड एट द एज ऑफ 35, अभी उसकी काम करने की काफी सारी एज बची हुई थी. एक जनरल आदमी लगभग 55 से 60 साल तक काम करता है, ठीक है ना, उस बंदे के पास लगभग 25 इयर्स थे, ठीक है ना. तो ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है कि दैट पर्सन इज गोइंग टू वर्क फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स, बट दैट अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड. क्लियर हो रहा है? तो फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स अगर वो काम करता तो इतना इतना इनकम उसके पास होता, और जो डिपेंडेंट्स हैं उसके वाइफ जो है, उसके जो बच्चे हैं, उसके मदर फादर हैं जो उस पर डिपेंड थे पूरी तरीके से, ही इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ हिज फैमिली, देन इन दैट केस जो क्लेम है ना वो बढ़ जाता है. यही चीज यहां पर हाईकोर्ट ने बोली, ठीक है ना. तो उन्होंने ये भी चीज बोली कि हाउ कैन मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल लाइक मिस दैट पर्टिकुलर थिंग. तो क्या हुआ था एक बार देखते हैं. इन द केस Kakinada Madhavi and others versus Port Nuri Ganesh and others, an appeal was filed before the High Court by the aggrieved party against the order of the Motor Accident Claim Tribunal for enhancing the compensation award. ठीक है ना. अब basically this appeal was filed before the High Court to enhance the compensation awarded by the Motor Accident Claim Tribunal. ठीक है ना. So when the complaint was filed before the Motor Accident Claim Tribunal, ठीक है ना, and the MACT awarded the compensation, but the petition, the dependents of deceased was not satisfied with the compensation awarded, so they approached the High Court in this matter. Clear हो रहा है? So a tragic motor accident occurred on 15th of March 2003 involving a jeep driven negligently by its driver, resulting in the death of Kakinada Rambabu. So basically the Kakinada Rambabu got died in a tragic accident due to the negligence of a jeep driver.
that person, the deceased was also traveling in the same jeep, but due to the negligent and reckless driving manner of the driver, that particular jeep met with an accident, and in that accident the Kakinada Rambabu got died. Clear it? So the deceased was 36 years old and earning a gross salary of 23,403 rupees per month. His family, including his wife, minor children, parents, sought compensation of rupees 40 lakh under the Motor Vehicles Act of 1988, claiming loss of dependency. तो हुआ क्या कि भाई ये बंदा लगभग 23,000 रुपए जो है महीने का कमाता था, 23,403 रुपए, ठीक है ना। और इनकी फैमिली में इनकी वाइफ है, इनके छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, और इन्होंने 40 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन क्लेम किया कि बोले साहब ड्यू टू द रीजन इज द लॉस ऑफ डिपेंडेंसी, कि भाई डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो गई, वी आर डिपेंड ऑन दैट पर्सन, बट दैट अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन डाइड. So under the Motor Vehicle Act, there is a provision: if any person died in a motor accident, then the dependents of that person is having the right to claim compensation. ठीक है ना? Under the clause of dependency. So they claim the compensation. So the Motor Accident Claim Tribunal, East Godavari District, awarded 19.9 lakh in 2008. लगभग 20 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन को 2008 में अवार्ड किया गया बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल. अब क्या हुआ? द हाई कोर्ट हाईलाइटेड द नीड टू अकाउंट फॉर ग्रॉस सैलरी आफ्टर प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन, अलाइनिंग विद द सुप्रीम कोर्ट स्टेंस इन मीनाक्षी वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस. अब यहां पर हाई कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि साहब इनकी जो है ना सैलरी में जो और चीजें जो एड ऑन की गई थी उनको डिडक्ट कर दिया गया. जो एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं ना अलॉन्ग विद द जो आपको सैलरी मिलती है उसके साथ जो एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर दिया, वो डिडक्ट कर दिया गया, उसके बाद उसको कैलकुलेट किया गया. ठीक है ना. तो हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट ने बोला कि द नीड टू अकाउंट फॉर ग्रॉस सैलरी आफ्टर प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शंस, aligning with the Supreme Court stance in the Meenakshi versus Oriental Insurance. तो एक केस रेफर करते हुए हाईकोर्ट ने बोला कि the court ruled that recoveries toward general provident fund, LIC and other schemes should not reduce the net income used for compensation calculation. कि भाई अगर कोई भी इनको प्रोविडेंट फंड मिल रहा था, LIC से कोई बेनिफिट था, अदर स्कीम्स थी, इससे इनका नेट इनकम जो है वो रिड्यूस नहीं किया जाएगा. आप ये नहीं बोलोगे कि यार यहां से तो मिल ही रहा है तो हम क्यों यहां पर कॉम्पनसेशन देंगे, ऐसा नहीं है. इफ एनी पर्सन is getting any provident fund, any benefit from provident fund, LIC or any other scheme, that does not reduce the compensation amount. तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने क्लियर की ये बात कि भाई उसका जो भी सैलरी बन रही है उस हिसाब से आप इसको जो है डील करेंगे, आपको इससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि इनको क्या बेनिफिट और मिल रहा है. फर्दर the high court added 50% of the deceased salary as future prospects since he was under 40 and had a permanent job. तो उन्होंने बोला कि that the person who got died, the deceased was in a permanent job, और उसकी सैलरी जो यहाँ पर कंसीडर की गई है बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल वो सही नहीं है. इसलिए तो हाई कोर्ट ने 50% इंक्रीज करी, एड ऑन करी, और ठीक है ना सैलरी में. फर्दर द हाई कोर्ट अप्लाइड अ मल्टीप्लायर ऑफ 15 फॉर द एज ग्रुप ऑफ 36, रिप्लेसिंग द 14.40 मल्टीप्लायर यूज्ड बाय द ट्राइब्यूनल. अब ये मल्टीप्लायर क्या होता है कि भाई जितने साल आपके बचे हैं उस हिसाब से आपकी सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाता है. भाई उतने गुना आपको सैलरी और मिलती आप अगर काम करते. तो इसी तरीके से जो क्लेम है ना, जो कॉम्पनसेशन है वो कैलकुलेट किया जाता है. 6% इंटरेस्ट रेट वाज एनहांस्ड टू 9% पर एनम. जो 6% का इंटरेस्ट रेट लगाया गया था बाय द ट्राइब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, उसको बढ़ाकर इन्होंने 9% कर दिया. बात समझ आ रही है? द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट व्हाइल रिवाइजिंग द टोटल कॉम्पनसेशन टू 49,76,907 rupees said that failure to consider future prospects deprives the dependent to rightful compensation and ignores the progressive legal framework on motor accident claims. तो इन्होंने बोला कि साहब in this case it is very important to consider the each and every aspect of the fact that person is below the age of 36 year, which is a very important thing to consider. ठीक है ना. यहाँ पर जो interest rates given by the applied by the motor accident claim tribunal is not justified. यहाँ पर जो आपने future prospect का add नहीं किया वो भी गड़बड़ है. तो after considering all the aspects, the High Court concluded that the 49,76,907 rupees compensation or the claim should be the the correct evaluation. तो यहाँ पर इनको अवार्ड किया कितना, 49,76,907 रुपए. So this is point number second, जहां पर
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के अवार्ड को इन्होंने एनहेंस किया। फर्दर यहां पर यह भी बताया कि क्या क्या चीजें देखनी जरूरी होती हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द कंपनसेशन अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट। आई होप द थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। if there is any confusion with the point number second, please let me know in the comment section. Meanwhile वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ेंगे in the point number third। In the point number third, again we are having Allahabad High Court's judgment in which Allahabad High Court said that a welfare state cannot act belatedly to correct its own mistake when the appointee is not responsible for any fraud. This point is related to compassionate appointment। ठीक है ना। अब भाई compassionate grounds क्या होते हैं, compassionate appointees क्या होते हैं? If any person's mother, father got died in a government, if they are in government job, they were in government job, and due to any reason if they died, ठीक है ना, so their post, their job should be given to their children, ठीक है ना, or their wife, ठीक है ना। लेकिन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में ना एक क्लॉज होता है, वो ये बोलता है कि इफ योर फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब और योर मदर इज इन गवर्नमेंट जॉब एंड no other person is in any other government job, ठीक है ना, and every person is depend on that person and that person got died, so in that case one member of from your family got the opportunity to enter in this system, ठीक है ना, surpassing the merit, surpassing the examination, ठीक है ना। if you are qualified enough for that post, you can be appointed for that post। क्लियर हो रहा है? तो ये होता है कंपैशनेट, जिसको हिंदी में अनुकंपा नियुक्ति भी बोलते हैं, ठीक है ना, कि भाई किसी घर वाले गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी डेथ हो जाती है जब वो नौकरी में थे, अब रिटायर होने के बाद डेथ होती है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर बंदा जॉब पर है और उसकी डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो आपको जो है उनकी जगह पर नौकरी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि साहब अगर वेलफेयर स्टेट, अगर स्टेट की गलती की वजह से कुछ भी चीजें हो रही हैं, देन इन दैट केस आप जो है अगले बंदे को एक समय के बाद, अगर किसी को अपॉइंट कर दिया गया था किसी भी रीजन से और एक समय हो चुका है, तो उसके बाद आप जो है अपनी गलती की वजह से किसी को नहीं निकाल सकते। अब हुआ क्या था, इसके लिए पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हुआ देखते हैं। इन द केस श्रीमती सुगंधा उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड टू अदर्स, अ रिट पिटीशन वाज फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट बाय द सुगंधा उपाध्याय अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक पिटीशन, रिट पिटीशन फाइल किया गया। क्यों फाइल किया गया देखेंगे। सुगंधा उपाध्याय, डॉटर ऑफ डिसीज्ड गवर्नमेंट employee Anil Kumar Upadhyay was appointed on compassionate ground as a junior assistant 2013। अब भैया क्योंकि अनिल कुमार उपाध्याय जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनकी जगह पर सुगंधा उपाध्याय जो उनकी डॉटर है, जो उनकी बेटी है, इनको अपॉइंट किया गया 2013, ठीक है ना, एज अ जूनियर असिस्टेंट। अब हर फादर हु वर्कड एज अ वेलफेयर असिस्टेंट इन द लेबर डिपार्टमेंट पास्ड अवे इन 2012। तो इनके फादर की डेथ 2012 में हुई थी, उनकी जगह पर एक साल के अंदर इनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के अंदर क्या मिल गया, जॉब मिल गई, ठीक है, किनको, इनकी बेटी को, मिसेस सुगंधा उपाध्याय। फॉलोइंग अ फादर्स डिमाइस she applied for compassionate appointment claiming dependency on him as a mother and father lived separately। तो इन्होंने बताया कि सर my mother and father both were living separately, that's why she is totally dependent on her father and father got died, तो इनको जो compassionate appointment मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट ने इसको अलाउ भी कर दिया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ठीक है। So a complaint by a retired senior assistant alleging that Sugandha was not entitled to compassionate appointment under the Uttar Pradesh Servants Dying in Harness Rules 1974, as her mother was already employed in a class 4th employee in the same department, disqualifying the petitioner from such an appointment under Rule 5। About this rule we are very much aware कि साहब अगर आपके परिवार में कोई और जो है गवर्नमेंट जॉब में है, then you are not eligible for compassionate appointment। बात समझ आ रही है। अगर आपके परिवार में कोई जो है ब्रेड अर्नर है, अगर कोई जॉब में है, ठीक है ना, तो फिर आपको अनुकंपा नियुक्ति नहीं होगी, आपके कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो इंटेंशन भी एट द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कि भाई अगर आपका घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसकी डेथ हो जाती है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ठीक है ना। तो भैया आपकी पेंशन तो मिलेगी, लेकिन आपकी जगह पर, आपके फादर की जगह पर या मदर की जगह पर आपको जॉब भी मिलेगी। ये बहुत बेसिक सी चीज है। लेकिन अगर आपके मम्मी खुद गवर्नमेंट जॉब में है, देन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड। तो
तो यहां पर जो कंप्लेंट फाइल की गई बाय द सीनियर असिस्टेंट, उनका बोलना यह था कि साहब Sugandha Upadhyay is not eligible for compassionate appointment as her mother was already in government job. क्लियर है? जो रूल 5 है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग इन हार्नेस रूल, बोले साहब यहां पर जो है किसी भी तरीके से इनको वो नहीं दिया जा सकता, अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा सकता था, लेकिन क्यों दे दिया गया? Petitioner's appointment was annulled and she was dismissed from service in July 2020. And after 9 years in service, the service of Srimati Sugandha Upadhyay was discontinued or dismissed. क्लियर हो रहा है? अब इनको जो है हटा दिया गया नौकरी से. ये कहां पहुंच गई? हाईकोर्ट पहुंच गई. अब हाईकोर्ट ने क्या बोला? हाईकोर्ट ऑब्जर्व दैट petitioner's appointment was not obtained by fraud or misrepresentation. He noted that the petitioner at the time of her application was only 18 years old and not expected to fully understand the technical requirement of the rules in 1974. बात समझ आ रही है? तो उन्होंने बोला कि साहब यहां पर फैक्ट्स को देखने के बाद हमें ये चीज समझ में आ रही है कि देयर इज नो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कमिटेड बाय द पिटिशनर, बाय द सुगंधा मिश्रा. At that time, at the time of compassionate appointment, when her father got died, she was just 18 years old, and at that age, the petitioner is not having any idea about the technical requirements of the rules of 1974. So there was no clear evidence of intentional non-disclosure regarding the mother's employment, suggesting that the oversight, if any, was on the part of authorities responsible for the appointment process. Well, sir, after looking into the facts of the case, we are very much sure that in this case, the petitioner is not responsible. Although it is the responsibility of the state authorities to take care whether at the time of granting compassionate appointment, they have to make a proper research about that person who is getting a compassionate appointment. क्लियर हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि साहब यहां पर गलती अथॉरिटीज की है, ना कि पिटिशनर की. तो हाई कोर्ट रेफर्ड द केस ऑफ मोहम्मद जमील अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, which stated that time and length of service are of paramount importance in cases of compassionate appointment. तो उन्होंने बोला कि साहब इस केस में जो है क्या बोला गया था कि भाई अगर जो टाइम एंड लेंथ है ना वो बहुत मैटर कर रही है. एक समय से अगर आप कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में हो तो फिर बाद में उसको स्टेट की गलती की वजह से नहीं रद्द किया जा सकता. क्लियर हो रहा है? So the High Court said that it was too late for the respondents to cancel the appointment after 10 years. बोले लगभग 10 साल हो चुके हैं और after 10 years you cannot cancel any person's appointment. Clear है? So particularly when the petitioner was not at fault for any misrepresentation. बोले साहब उसकी कभी गलती थी ही नहीं यहाँ पर तो स्टेट अथॉरिटीज की गलती थी, तो आप 10 साल के बाद इसको कैंसिल नहीं कर सकते. दिस इज द क्लियर कट observation given by the High Court. So finally, the Allahabad High Court, while allowing the plea, concluded that the dismissal was contrary to law, directing the respondent to reinstate the petitioner with immediate effect and provide all consequential benefits. तो उन्होंने बोला कि साहब विद इमीडिएट इफेक्ट आप इनको रिइंस्टेट करेंगे और जितने भी टाइम के लिए आपने इनको सस्पेंड रखा था या जिनको आपने जो डिसमिस कर दिया था वो सारे इन बिटवीन जो भी बेनिफिट्स हैं वो इनको प्रोवाइड किए जाए. क्लियर हो रहा है? सो दिस इज द पॉइंट नंबर 3. आई होप दिस पॉइंट इज clear. If any person is having any doubt, please let me know in the comment section. Okay, let's move forward. In the point number 4, we are having a very interesting judgment from the Punjab and Haryana High Court, in which the High Court said that a wife calling her husband hijra or transgender amount to mental cruelty. ठीक है ना? अगर आप किसी को जो है अगर वाइफ अपने हस्बैंड को ट्रांसजेंडर बोलती है, ठीक है ना, that would amount to mental cruelty. ये चीज किसने? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला. क्या हुआ था इस केस में एक बार देखते हैं. ये एक डाइवोर्स पिटीशन है जो कि फाइल किया गया था बाय द हस्बैंड बिफोर द फैमिली कोर्ट, व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय द फैमिली कोर्ट. सो एन अपील वाज फाइल्ड बाय वाइफ बिफोर द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द फैमिली कोर्ट. तो इनका बोलना ये था कि साहब हाई फैमिली कोर्ट ने यहां पर डाइवोर्स कैसे दे दिया, एंड जो ग्राउंड दिए हैं फैमिली कोर्ट ने कि साहब क्रुएलिटी है ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ, क्या वो जस्टिफाइड थे? ये यहां पर हुआ. देखेंगे इन दिस केस एन अपील वाज फाइल्ड बाय अ वाइफ बिफोर द हाई कोर्ट अगेंस्ट द डाइवोर्स डिक्री ग्रांटेड इन फेवर ऑफ हर हस्बैंड बाय अ फैमिली कोर्ट. क्लियर है? The couple had married in December 2017. 2017 में इनकी शादी हुई थी. The husband in the divorce plea had alleged that his wife used to wake up late at night and ask his ailing mother to send her lunch on the first floor from the ground floor. बोले साहब ये अचानक रात में उठ जाती है और फिर खाना मांगती है. मेरी माँ से बोलती है जो कि बूढ़ी हैं, चलने में दिक्कत होती है, उनसे बोलती है मुझे खाना ऊपर दे के जाओ. मतलब ये तो टॉर्चर है. एक वृद्ध आदमी से, एक बूढ़े आदमी से आप बोलोगे मुझे फर्स्ट फ्लोर पर खाना दे के जाओ. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. Clear it? Further, it was also alleged that she was addicted to porn and mobile games.
तो उन्होंने बताया कि साहब मेरी जो वाइफ है वो पॉर्न और मोबाइल गेम्स में बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, ठीक है ना। In particular, the husband alleged that the wife used to ask him to record the duration of sex and would also state that it must go for at least 10 to 15 minutes at a time and that it must be at least thrice per night. तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि साहब ड्यूरेशन ऑफ सेक्स आपको रिकॉर्ड करना है, ये जो आपकी फैंटेसी है, ठीक है ना, कि भाई जो है लगभग जो सेक्स ड्यूरेशन है वो 10 से 15 मिनट की होनी चाहिए फॉर द, इन्होंने बोला कि साहब एटलीस्ट थ्राइस पर नाइट। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, ये जो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, दे आर नॉट जनरल इन नेचर, ठीक है ना। ये एक एडिक्टेड पर्सन, इफ एनी पर्सन इज एडिक्टेड टू पॉर्न, उसकी ये टाइप की फैंटेसीज होगी, ठीक है ना। तो यही चीज हस्बैंड ने बोली कि सर वाइफ जो है ना वो इस तरीके से टॉर्चर कर रही है। शी यूज्ड टू टॉन्ट हिम फॉर नॉट बीइंग फिजिकली फिट टू compete with her। उन्होंने बोला कि साहब यू आर नॉट कंपैटिबल, ठीक है ना, आप मुझे कंपीट नहीं कर सकते, मेरा जो एक तरीके से मेरा जो फिजिक है वो फार बेटर है आपसे। मतलब ये कुल मिलाकर टॉन्ट मारना अपने हस्बैंड को कि नहीं तुम जो है फिजिकली फिट नहीं हो, यू आर नॉट गुड इन लाइक सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है ना। सो एंड हैड डिस्क्लोज दैट शी वांटेड टू मैरी समवन एल्स। उन्होंने बोला कि यार तुम सही आदमी नहीं हो, मैं किसी और से शादी करनी है। तो दैट फॉर दैट लेडी सेक्स इज एवरीथिंग, ठीक है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस इज मैटर्स अ लॉट। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी, दिस इज नॉट क्वाइट रीजनेबल और क्वाइट जनरल इन नेचर, क्लियर है। तो ये चीज हस्बैंड ने पूरी बात फैमिली कोर्ट के सामने रखी थी। The husband's mother had deposed that his wife would call her son hijra। और इनकी मां ने यह भी बताया कि भाई उनकी जो वाइफ है, ठीक है ना, जो यहां पर बेसिकली अपीलेंट है, वो उनके बेटे को हिजड़ा। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी मदर, फॉर एनी पर्सन, ठीक है ना। सो हाई कोर्ट सेड दैट if the findings recorded by the learned family court are examined in the light of the judgments of the honorable Supreme Court, it comes out that the act and conduct of the appealant wife amount to cruelty। तो यहां पर हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अगर हम फैमिली कोर्ट की एक तरीके से रिकॉर्डिंग्स को, फाइंडिंग्स को देखेंगे कि भाई जो भी रीजंस उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं while granting divorce decree to the husband, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ, तो हमें ये समझ में आएगा कि जो फाइंडिंग्स है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल ये क्रूएलिटी बन रही है, जो हरकतें वाइफ कर रही है, this would amount to cruelty, ठीक है ना। So firstly, terming the respondent's husband as hijra and calling his mother to have given birth to a transgender is an act of cruelty। भाई एक लड़के को ट्रांसजेंडर बोल रहे हो, दूसरी तरफ उसकी मां से बोल रहे हो यार कैसी औलाद पैदा कर दी, ठीक है ना, क्या लड़का तुमने पैदा किया है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एनी मदर, फॉर एनी पर्सन, ठीक है ना। सो द पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट while rejecting the plea, तो इस प्ली को रिजेक्ट किया, and upholding the judgment and the divorce decree granted by the family court, this clearly said that considering the overall act and conduct of appellant wife and further considering that the parties had been living separately for last 6 years, it was rightly found by the learned family court that the marriage between the parties has ruptured beyond repair and it has becomes a dead wood। तो उन्होंने बोला कि साहब अब ये चीजें खत्म हो चुकी हैं because they were living separately from the last 6 years, 6 साल से जो है अलग रह रहे हैं, ठीक है ना। अब ये इर्रिवोकेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है ये एक तरीके से, ठीक है ना। इसलिए अब ये चीजें सही नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर डाइवोर्स यहाँ पर जो दिया गया था हम उसको अपहोल्ड कर। सो दिस इज द जजमेंट गिवन बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इफ एनी पर्सन इज हैविंग एनी डाउट विद दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, in the next point, we are having a very interesting judgment from Consumer Court, Delhi Consumer Court, District Consumer Dispute Redressal Commission, Delhi. ठीक है ना? What happened in this case? So Delhi Consumer Court ordered the LIC, which is the Life Insurance Corporation, and Municipal Corporation of Delhi to pay 40,000 rupees as compensation to the family of a deceased sweeper over the rejection of 2 insurance claims. तो यहाँ पर हुआ क्या कि साहब एक स्वीपर की जो है ना डेथ हो जाती है और उसने 2 पॉलिसीज ले रखी थी एलआईसी के साथ, ठीक है ना। वो एमसीडी का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का एम्प्लॉय था, ठीक है ना। तो एलआईसी ने इनके जो क्लेम्स है ना उसको अप्रूव करने से मना कर दिया। समझ आ रही है बात? इसलिए यहां पर 40,000 रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ा। हुआ क्या था पूरा मैटर एक बार देखिए। इन द केस संतोष देवी एंड अनदर वर्सेस एलआईसी एंड अनदर, द कंज्यूमर कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय द वाइफ एंड डॉटर ऑफ द लेट जोगिंदर कुमार हु हैड बीन वर्किंग एज अ सफाई कर्मचारी स्वीपर विद द एमसीडी इन द करोल बाग जोन, ठीक है ना। तो जो डिसीज्ड है बेसिकली दैट पर्सन वाज वर्किंग एज अ स्वीपर, सफाई कर्मचारी, ठीक है ना, विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इन करोल बाग जोन इन दिल्ली, ठीक है ना। जब उसकी डेथ हो जाती है
तो उनकी वाइफ और जो उनकी डॉटर है ना वो पहुंचती है कोर्ट। क्यों पहुंचती है देखिए, ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट ही ऑप्टेड फॉर 3 सैलरी सेविंग स्कीम पॉलिसीज ऑफर्ड बाय एलआईसी। तो भाई होता क्या है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं ना इनके लिए एलआईसी की पॉलिसीज चलती रहती हैं, तो इसने ऑप्ट किया यहाँ साहब हम जो है 3 उसने स्कीम्स ऑप्ट कर ली कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी उसको जो है बेनिफिट दिया जाएगा फ्रॉम एलआईसी, ठीक है ना। और जो भी प्रीमियम जाता था, जो भी पैसे दिए जाते थे फॉर दैट पॉलिसीज, दैट शुड बी डिडक्टेड बाय द एमसीडी एंड गिवन टू द एलआईसी। कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है जब सैलरी भेजेंगे तो उसको भी डिडक्ट कर लेंगे और एलआईसी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये इट इज द बेसिक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू कट डाउन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फ्रॉम द सैलरी एंड गिवन इट टू द एलआईसी। ये बहुत बेसिक। अब क्या हुआ, कुमार पास अवे इन 2016, ठीक है ना। एक अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है, जोगेंद्र कुमार साहब, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हिज फैमिली देन अप्लाइड टू रिसीव द अमाउंट इंश्योर्ड अंडर द 3 एलआईसी स्कीम्स ही अवेट। इन्होंने बोला कि साहब जो 3 एलआईसी पॉलिसीज इन्होंने ली थी, अब क्योंकि उसमें ये क्लॉज था इफ एनी पर्सन डाइड देन डेफिनेटली इन दैट केस उनको जो है क्लेम मिलेगा। जब ये क्लेम के लिए गई तो इनको क्लेम जो है वो मना कर दिया गया। However, only one of their 2 claims were allowed. एक ही क्लेम को पास किया गया, 2 छोड़ दिए, ठीक है। 3 क्लेम्स थे इनके पास टोटल। LIC rejected the 2 remaining claims on the ground that they had lapsed due to non-payment of premium. तो इन्होंने बोला कि सब प्रीमियम उसका पे नहीं किया गया, इसलिए हम इसको पास नहीं कर सकते। अब प्रीमियम क्यों नहीं पे किया गया? इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली टू पे प्रीमियम, ठीक है ना, फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। अगर सैलरी से आप काट कर प्रीमियम नहीं पे करोगे, then who is going to be responsible? The MCD only, the employer only, not the employee. The Consumer Court relied on several Supreme Court's judgment, including the Delhi Electric Supply Undertaking versus Basanti Devi and Chairman. Further, another judgment, Life Insurance Corporation versus Rajiv Kumar Bhaskar, which held that under the salary saving schemes, it is the employer's responsibility to deduct and remit premium to the insurer, and that if premium are not paid, the insurer must inform the employee. तो इन्होंने क्या बोला कि साहब इट इज द बेसिक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर कि वो सैलरी से पैसे काटे और प्रीमियम भरे। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ एलआईसी इज नॉट गेटिंग द प्रीमियम, देन इट इज देयर बेसिक रिस्पांसिबिलिटी टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉय कि साहब आपके प्रीमियम नहीं आया और आपके एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से काटकर हमको नहीं भेज रहे हैं। अगर कल के दिन कुछ हो गया तो वी आर नॉट गोइंग टू पे यू द क्लेम। क्लियर हो रहा है? लेकिन ना तो एलआईसी ने यहां पर इन्फॉर्म किया और ना ही एमसीडी ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने यहां पर क्या करा, उनका प्रीमियम दिया। कहां? किसको? एलआईसी को। अब द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट both MCD and LIC were jointly responsible for failing to ensure the deposit of monthly premium installment that were to be deducted from sweeper's salary, which has been cited by LIC as the reason for claiming lapse. ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि साहब क्योंकि हमें प्रीमियम नहीं मिला इसलिए हम जो है क्लेम नहीं देंगे। तो कोर्ट ने बोला कि भाई प्रीमियम क्यों नहीं मिला? प्रीमियम तो आपको कौन देगा? LIC वो देगा, MCD देगा। तो MCD ने नहीं दिया, इसमें एम्प्लॉय की क्या गलती है? बात समझ आ रही है? So, the District Consumer Dispute Redressal Commission ordered that the 2 life insurance claim, one worth rupees 1.6 lakh and another worth rupees 3.2 lakh, which in total around 4.8 lakh or 5 lakh, should be paid along with the interest of 9% per annum from the October 13, 2016, when the employee passed away, till the amount is actually paid. तो भाई जब से वो मैच्योर हुआ था क्लेम और जब वो दिया जा रहा है उस बीच में जितना भी टाइम पीरियड आपने लिया 9% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है ना। और आपको 40,000 रुपए एज अ कॉम्पनसेशन जो मेंटल एगनी उनकी हुई है और 20,000 रुपीज एज लिटिगेशन कॉस्ट, ये आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा। सो दिस इज द जजमेंट, दिस इज द ऑर्डर गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। आई होप द जजमेंट इज क्वाइट क्लियर। इफ एनी पर्सन इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। माय नेम इज वरुण सक्सेना and today we covered the legal news analysis session for 22nd of October 2024. If any person is having a single doubt, please let me. Okay, so see you tomorrow at the same time, 8 a.m. From today onward, we are going to cover the legal news analysis session at a new timing, which is the 8 a.m. in place of 9 a.m. ठीक है ना? If any person is having any doubt, please छूटिए हमारे साथ लाइव सेशन में और जो है डिस्कस करेंगे हम आपके डाउट्स। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। अब टिल देन अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो हमें आपके साथ डिस्कस जरूर करें। थैंक यू।